that we were talking about earlier. So I wanted to welcome all to our guest speaker session today for the Vihara session this day. And our guest speaker is Dr. Karuna Jadhav. I just wanted to introduce her before we request her for her session or for her talk today. So Dr. Karuna Jadhav is an assistant professor of Pali at K.J.Somaiya Institute of Dharma Studies in Mumbai, and she teaches Pali and Buddhist studies at the college. She completed her MA and MPhil and PhD in Pali, MA and MPhil in Pali language from University of Mumbai, and has also done her MA in Sanskrit. Her PhD thesis is on in theory of Kamma and Vipaka expounded in Petavattu and Vimanavattu. So Petavattu and Vimanavattu are the two books that are part of the Dhammacakkapavattan Sutta. Khuddaka Nikaya, it's part of the Khuddaka Nikaya. And she did it in a Pali language. So very well versed in Pali. And she has been also awarded a junior research fellowship by UCG, University Grants Commission, in 2012. Other than Pali language, she also keep interest in Sanskrit and Prakrit languages and ancient scripts like Brahmi and Kharoshti. She has presented to several research papers in national and international journals and at conferences and seminars. And her topic today is Dhammacakkapavattan Sutta, which is what we all are trying to celebrate, the day on which the Sutta was expounded by Buddha. So without further ado, I wanted to invite Dr. Karuna Jadhav to our session today. So Tai, you have all your time to take for the session. We will open up the forum towards the end for question and answer. Thank you so much for this introduction. Am I audible? Yes, Tai, yeah, you are audible. Please. First of all, I would like to thank you for your invitation to deliver this lecture. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. I salute Father of Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar. And today's topic is Dhammacakkapavattan Sutta. So I will be bilingual, English and Hindi as well, because there are my Indian students and other colleagues who are joining. So I will speak in English as well as in Hindi. Okay, would that be fine? Yeah, absolutely. Absolutely. Please. Yeah. Okay. I will just share my PPT. Okay, can you all see the PPT? Yes, Dr. Karuna, we can see it. Please go ahead. Yeah. So this sutta, that I'm talking from Pali literature. This sutta, if you see, this sutta is seen at two places. First is it is in Sanyukta Nikaya, and second Vinaya Pitaka. One part of Vinaya Pitaka, Mahavagga, we say that this is a Dhammacakkapavattan. Okay, and the Sutta, Dhammacakkapavattan Sutta, it is there in Sanyukta Nikaya. So these are the sources of Pali where we find Dhammacakkapavattan Sutta. Now, it's very important to see
why Dhammacakkapavattan Sutta is given. So background of Dhammacakkapavattan Sutta. So my talk altogether, it deals with the importance of Dhammacakkapavattan Sutta in the Buddhism, and why Dhammacakkapavattan. Dhammacakkapavattan जो सुत्त है उसका महत्व और वो क्यों दिया गया है, उसका बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड ऑफ Dhammacakkapavattan Sutta. Who can do Dhammacakka? Okay. And meaning Dhammacakkapavattan, the content of Dhammacakkapavattan Sutta, and even the symbolic representation of this Dhammacakkapavattan Sutta. तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आगे का जो 1 घंटा मुझे दिया गया है, तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. आप क्वेश्चन है तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप मराठी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में पूछ सकते हैं, because there are some people who are joining from India, so I take that liberty to answer them in all 3 languages. ओके, सो ये टॉक में आपको धम्मचक्कपवत्तन सुत्त का जो महत्व है वो क्यों है, क्योंकि सुत्त है वो तो है, लेकिन इसका महत्व क्यों है. धम्मचक्कपवत्तन सुत्त देने से पहले जो इंडियन सोसाइटी थी उसकी जो कंडीशन है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ ancient Indian society when we want to know about Dhammacakkapavattan Sutta. Only knowing Dhammacakkapavattan Sutta will not do. We have to understand the background of Dhammacakkapavattan Sutta. So in my talk, we will be looking at the importance and relevance of Dhammacakkapavattan Sutta, the meaning, the content, and people who are benefited, the first 5 Panchavagya bhikkhus, what they have learned, and before that what was the situation, that we are going to learn. So the meaning of Dhammacakka Pavattan. Okay, Dhammacakkapavattan का अर्थ क्या है? So Dhammacakka Pavattan, this word has made up of 3 words, Pali words, Dhamma, Chakka or Pavattan. So when we say Dhamma, it has many meanings. इसके बहुत अर्थ है पाली साहित्य में. उसका जो सबसे ज्यादा अर्थ जो हम माना जाता है वो है टीचिंग, ओके, डॉक्ट्राइन, और भी इसे एलिमेंट्स कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे जो बुद्धा की टीचिंग है जो लिबरेशन के मार्ग तक, पाथ तक लेके जाती है. चक्र माना व्हील, चक्र. This is Pali word, Prakrit of ancient Indian language. We can say that chakra, wheel. So the wheel of Dhamma that leads to liberation. So this is the meaning of Dhammacakka Pavattan. So setting that wheel in motion, the wheel of Dhamma. Okay. And before that, when we say Dhamma Chakra, we have to understand that it was just opposite to Bhava Chakra. Okay, this is also very important. So we are going to deal with this. हमें ये जानना है कि जब हम लोग कहते हैं कि धम्मचक्र पवत्तन है, धम्मचक्र चक्र है, तो इसके अपोजिट भव चक्र था और उससे मार्ग, उससे निकलना, भव चक्र से निकलना ही धम्म चक्र था. This is the knowledge that Buddha has attained after his enlightenment. बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया मुक्त होने के लिए, दुख, इट इज द दुख मुक्ति, सेसेशन ऑफ सफरिंग. सो उसके लिए ये जो धम्म चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भव चक्र से आपको बाहर निकालता है. सो भव चक्र मीन्स द साइकिल ऑफ life and
death. We'll go ahead now. I'm just telling you about the background of Dhammacakkapavattan Sutta, or when Buddha gave this first sermon. And what are the importance of, before going to background of this history of this Dhammacakkapavattan Sutta, we'll just see the importance of Dhammacakkapavattan Sutta. इसका महत्व क्या है? तो this is first teaching. ये पहला जो डिस्कोर्स है या जो टीचिंग है बुद्ध के द्वारा दी गई, ये पहला सूत्र है या पहली टीचिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टीचिंग विच इज गिवन. इट्स अ मिडल पाथ, जो मध्यम पटिपदा कहते हैं पाली में, या मध्यम मार्ग कहा जाता है. उसके बाद में ये जो टीचिंग है, ये टीचिंग की जो महत्व है, इसके लिए भी है कि ये जो पाथ है बुद्ध ने ढूंढ के निकाला है, वो लिबरेशन की तरफ लेके जाता है. द पाथ विच लीड्स टू लिबरेशन. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरेशन? लिबरेशन according to Buddha was the you are free from all the sufferings and you attain the bliss of enlightenment. That is called the liberation. You are free from all the defilements, you are free from all the suffering. So this particular path, or this particular path which is described in Dhammacakkapavattan Sutta, it is very meaningful and important because it tells you how to get rid of suffering. ये जो धम्मचक्कपवत्तन है, इसमें दी गई जो भी टीचिंग है, वो आपको कहती है कि आप कैसे दुख मुक्ति और जो लिबरेशन है उसकी तरफ जा सकते हैं. तो उसका सारा जो डिस्क्रिप्शन या वर्णन है, ये इसमें दिया गया है और इसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है. So now we will just go to the background of this sutta. What was the social condition, the religious condition prevalent in ancient society? Okay, so we all know that Buddha, he put a lot of effort for at least 6 years to attain Nibbana, enlightenment. Okay, so before attaining his final enlightenment, he was he used many ways, he used many techniques which were prevalent at that time. 6 साल के लिए उन्होंने परिश्रम किया, और वो 6 साल उन्होंने कैसे क्या परिश्रम किया, मतलब अलग अलग जो धारणाएं थी उस टाइम पे, वो धारणाएं, उसके सारे जो टेक्निक्स है, वहां पे जो भी टीचर्स थे उनसे उन्होंने सीखी, जो भी शिक्षाएं थी, जो भी टीचिंग्स थी, वो उन्होंने सीखी और उन्होंने अप्लाई की. जैसे कुछ खाना ही नहीं, 7, 8, 10 दिन के लिए कुछ खाना ही नहीं, या एक कण पे जीना है, ये सारे उन्होंने टेक्निक्स यूज की मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए. To attain that final enlightenment, he used so many techniques. So why Buddha used those techniques or self mortification? He did self mortification. We should know the Indian society, the spiritual life at that time. We should know. So, according to Pali literature, if we say Brahmajala Sutta, or if we say the Samaya Sutta, which is there in Digha Nikaya, these particular suttas gives reference of six heretical teachers, okay, and their teachings. And there are 62 heretical views which are described in Brahmajala Sutta. सामान्य फल सूत्र है और ब्रह्मजाल सूत्र है, उसमें हम देखेंगे कि जो 6 अलग अलग टीचर्स थे जो बुद्ध के समय पे अपनी टीचिंग्स दे रहे थे, और उनकी अलग अलग धारणाएं थी.
तो उस धारणा में हम लोग देखेंगे कि अजित केसकंबली, संजय बेलट्टी पुत्र, निघंटनाथ पुत्र, जो हम लोग कहते हैं कि जैन, जो हम लोग जीन कहते हैं उनको, या महावीर कहते हैं, पूर्ण कश्यप और एक टीचर थे, पकुद कच्चायन थे, मक्खली गोसाल थे। ये टीचर मेन टीचर थे जिनकी टीचिंग उस समय में प्रसिद्ध थी और लोग वो टीचिंग फॉलो करते थे। बहुत सारे लोग अलग अलग टीचर्स के अंडर फॉलो करते थे, और ये जो लोग थे वो श्रमण थे, श्रमणस थे। दे वर नॉट, दे वर फॉलोइंग द श्रमण पाथ। लेकिन इनकी जो टीचिंग है, आपको मैं इसमें से कुछ इनकी जो धारणाएं हैं वो बताती हूँ। तो पूर्ण कश्यप था, वो ही यूज्ड टू डिनाइज द रिवॉर्ड ऑफ एनी गुड थिंग्स, गुड रिवॉर्ड्स और मेरिटोरियस डिड्स। जो कुशल कर्म है, होलसम एक्शंस है, उसका कोई भी फल मिलता है, इस वो मन नहीं मानते थे। मतलब कोई अच्छा कर्म किया तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, इसका उस ये जो धारणा थी कि उस पे वो विश्वास नहीं करते थे। He was a पूर्ण कश्यप. Then there was a Makhali Gosala. He was a person, he was a teacher. He used to see that the suffering is predestined. मतलब जो दुख है वो पहले से है, अभी नहीं, हमारी प्री डेस्टिनी है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये उसकी धारणाएं थी, और उसके जो फॉलोवर थे वो भी इसको मानते थे। जो महावीर, मतलब जो निघंटनाथ पुत्र कहते हैं, जिसे पाली साहित्य में, he used to believe that everything can be cleansed or suffused with the avoidance of evil. जो भी कुछ है वो evil से cleansed होता है, मतलब जो भी अकुशल है उससे cleansed होता है। Okay. Then there was a Pakuda Kachayan teacher who used to believe in Sasatavada. So soul is eternal, and the matter, the pleasure, pain, and the soul, all are eternal. So this was his teaching. Then there was a Sanjay Belati Putta, who was really his teaching. If you see, it was confusing. Confusing means मैं ये भी नहीं मानता, मैं वो भी नहीं मानता, मैं I don't think so. I don't think so that in that way or in other way. Okay. And his judgment was suspicious always. So his answer was not exact, or we can say something which we can judge. It was always suspicious. And whatever the teaching. So these were the 6 heretical teachers. ये 6 जो टीचर्स है वो अपनी अलग अलग धारणाएं समाज में बता रहे थे, और उनके फॉलोअर्स भी थे। ऐसा नहीं है कि उनके फॉलोअर्स नहीं थे। तो this was a background of society at that time which was prevalent, and there was 62 wrong views which were prevalent. Okay. So these were the Shramanas, but there was a Brahmins also, which they had different views. Okay. So ये समाज की परिस्थिति थी उस टाइम पे, और उसका बैकग्राउंड था। और ये जो इस धारणा में कुछ धारणाएं भगवान बुद्ध ने भी, मतलब वो सेल्फ मोर्टिफिकेशन का उन्होंने ये लिया था, प्रण लिया था, या वो फॉलो कर रहे थे। वो 6 साल, जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, जब बुद्ध नहीं हुए थे, और 6 साल उन्होंने बहुत
प्रयत्न किया, he put lot of his effort to attain liberation, but he was unsuccessful in that. Okay, then what he did, where we everybody knows. Then he had heat of Sujata, and then he came to know that I should eat something so that my mind will be stable, and then I can meditate. So to maintain the mental status, it's very important to maintain our body also. That means we cannot give so much torture to our body. हम अपने शरीर को ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जब हम लोग टॉर्चर करते हैं तो माइंड हम लोग वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, राइट? सो उन्होंने तब जाना और वो खीर खा के उसके बाद में he felt that now I can meditate, and then when he started meditating deeply, he attained that final bliss, enlightenment, जो लिबरेशन हम लोग कहते हैं, और ज्ञान की एक अवस्था है जहां पे उन्हें पता चला कि ये जो भव चक्र है उससे मुक्ति कैसे पाना है. So I was just talking about the background of Sutta. Background in the sense the social condition, religious condition which was prevalent at that time. वहां पे जो सामाजिक और जो रिलीजियस कंडीशन थी वो बहुत महत्व रखती है धम्मचक्कपवत्तन सुत्ता जानने के लिए, उसका महत्व जानने के लिए. सो ये सारी धारणाएं थी. बुद्ध भी उसमें से ही एक धारणा से गए थे. उन्होंने 6 साल जो प्रयत्न किया मुक्ति पाने के लिए, लिबरेशन पाने के लिए, तो उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिला. सो when we say Dhammacakka, we have to understand it is just opposite to that Bhava Chakra. Okay. So what is that Bhava Chakra? So the Bhava Chakra is the cycle of death and life. मतलब जन्म मरण का जो चक्र है उसे भव चक्र कहते हैं. जैसे कि हम जन्म लेते हैं, we take birth, then after taking birth, we everything, this series of things connected or associated with our life. When we take birth, definitely some people are they get deceased. Okay, they get deceased, then definitely after some period of time there is a decay. जन्म लेने के बाद में हमें कुछ भी जो डिसीज है ना, हम लोग कहते हैं कि मुझे ये हुआ है, मेरा पैर दुख रहा है, मुझे ये तकलीफ है. सो जन्म होता है तो इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं, वो आती ही है. किसी को वो ज्यादा मात्रा में आती है, किसी को कम मात्रा में आती है. लेकिन ऐसा कोई आदमी या व्यक्ति नहीं है जो पूरे लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आई वाज सो हेल्दी. इट इज नॉट लाइक दैट. Yes, there are some people who are healthy, but definitely some or the other suffering is there. So that's very important. Okay, to know that the life is associated with all these things. So एक एज होने के बाद में हम डिके मतलब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो वो भी एक लाइफ का पार्ट है. This is also one of the part of our life. It's not like that the entire life, the whole life I am young. Okay, so ये सारी चीजें जैसे जन्म लेना, उसके बाद में जो डिके है, कोई भी हमें तकलीफ होती है, और उसके बाद में मरण है मतलब डेथ. ओके, सो दिस इज ऑल दीज आर connected to our life and death.
whatever, whenever we are taking birth, this is going to be there, okay, some or the other way. So this is bhava chakra, and because of this we are getting suffering, we suffer a lot, right? हमें दुख मिलता है. कोई ऐसा है कि मेरा पैर दुख रहा है और मैं बहुत खुश हो गया, वाह 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 मेरा पैर दुख रहा है. It's not like that, okay? So हमें वो जो दुख है वो कहीं ना कहीं लाइफ में होता ही है. और इसके लिए हम लोग आगे जाके देखेंगे, ये जो सुत्त है उसका जो कंटेंट है वहां पे 4 आर्य सत्य के बारे में कहा गया है. सो सुत्ता डील्स विद द 4 नोबल ट्रुथ्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन फर्दर स्लाइड्स. ओके, सो दिस इज भव चक्र. ये भव चक्र है. भव चक्र मतलब जन्म मरण का चक्र. और चक्र क्यों कहा गया है? हम लोग बार बार इस चक्र में आते हैं. जन्म होता है, उसके बाद में ये सारी जो अवस्थाएं हैं, हम लोग बड़े होते हैं, उसके बाद में हमें बुढ़ापा आता है, हमारी डेथ होती है, उसके बाद में फिर से जन्म. तो ये क्या है? साइकिल है. हम बार बार इस भव चक्र में आ रहे हैं. We have to know this, very important, that we are taking rounds of this life and death cycle. This is very important. Okay, so we are coming again and again in this life or other life, but we are coming again and again. It's very important. So this is called bhava chakra, and just opposite to that Dhammacakka in Pali. So what is this Dhammacakka? How to get out of this bhava chakra, how to get rid of this bhava chakra. ये भव चक्र से हम लोग बाहर कैसे निकले, ताकि ये जो दुख है जन्म होने के बाद में, yes definitely I am not saying कि if someone is in your family, someone is born, you should, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुद्ध ने कहा है कि मातंग बनाओ. It's not like that, but to know that reality, it's very important that when you take birth, the other suffering is connected to that. So Buddha says that we have to know the reality of the life. Okay, that's very important. Reality, what is the reality of the life? The truth, 4 truth that we are going to see in further slides. Okay, so दुख है और वो हर एक चीज में, हर एक जो फेज है उससे कनेक्टेड है. So the suffering is connected to each and every phase of our life. Okay, and that is called bhava chakra. And Buddha has found out way to liberation, way to get out of this dukkha. Okay, so the bhava chakra, it is just opposite to Dhammacakka, the teaching which leads to liberation. And how it is Dhammacakra, how the teaching leads to liberation, that we'll see. I'm just going to another slide. Okay, so this Dhammacakkapavattan Sutta, Buddha gave, as our earlier speaker or the organizer, he was talking about, this sutta was given to 5 monks, first monks, Panchavagya bhikkhus at Isipitana Migadaya, the deer park, okay, which is there in Varanasi. ये जो सूत्र है वो पंचवज्ञ भिक्षुओं को दिया गया था इसिपितना मिगदाय. ये प्लेस है वाराणसी में जहाँ पे ये सूत्र, जो फर्स्ट सूत्र कहा जाता है, वो दिया गया था. और वो कैसे दिया गया था कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, when he attained enlightenment, after that he started thinking, whatever knowledge I have gained, it is very difficult to understand. People will not be able to understand. So who are the capable ones? ये जो ज्ञान है ये बहुत
कठिन है समझने के लिए। तो इस ज्ञान को समझने के लिए कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये समझा पाऊं, और ऐसे ही लोग रहेंगे जो थोड़े से पक्व है स्पिरिचुअलिटी में, जो आध्यात्मिक, जिनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज्ञान है, उनको ये समझने में आसानी होगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको दे दूं। तो जब वो बोधिसत्व थे सिद्धार्थ गौतम, ही वॉज नॉट बुद्धा एट दैट टाइम, बिफोर अटेनिंग बुद्धाहुड ही वॉज अ बोधिसत्व, वो बोधिसत्व थे। और व्हेन ही वॉज अ बोधिसत्व, he had two teachers, Alar Kalama and Udak Ramakutta. ओके, सो उनके दो टीचर थे जब वो बोधिसत्व थे, आलार कालाम और उदक रामकुत्त। तो वो है कि उन्हें समझ सकते हैं, जिन्होंने उनको कुछ ध्यान प्रक्रिया सिखाई थी, 7वां ध्यान और 8वां ध्यान, 7th level of meditation and 8th level of meditation. Okay, so he thought of them कि मैं उनको बताऊं, I should teach my whatever knowledge I have received, I should tell them so that they will be able to understand in a better way. Okay, because the knowledge I have received, I have gained, it's very difficult. ये बहुत कठिन है जो दूसरों को समझ सकता है या मैं समझा पाऊं और वो समझ सकते हैं। तो ये जो दो टीचर थे, शिक्षक थे, उन्हें मैं ये ज्ञान दे दूं। लेकिन उन्होंने अपने जो सुपर नॉर्मल पावर्स थी उनसे जाना कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, दे पास्ड अवे। ओके, उन्होंने क्या किया कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है और उनको मैं बता नहीं सकता हूँ। सो these two teachers were not there at that time, they were no more at that time. So then who are the next persons to whom I can give this knowledge? कौन है कि मैं जिसे ये जो ज्ञान है जो मैंने पाया है वो मैं दे सकता हूँ। तो वो मेरे 5 दोस्त थे जो 6 साल भगवान सिद्धार्थ गौतम ने सेल्फ मोटिफिकेशन किया था या जो प्रयत्न किए थे, तभी ये जो 5 उनके फ्रेंड्स थे उनको मैं ये ज्ञान दे सकता हूँ और उन्हें ये समझ सकता है। सो दीज वर द बिफोर दिस पंचवज्ञ भिक्षुस, they were his friends when he was bodhisattva. And then gradually he from Bodh Gaya he started walking and he went to Isipatanam Mummigdaya and to give them this Dhammacakkapavattan, that means the knowledge he has gained during his enlightenment. So उन्होंने पहले तो ये 5 शिष्य थे, उन्होंने बहुत हिचकिचाए क्योंकि उनको लगा कि ये भ्रमित हुआ है। All these 5 his friends, they thought that this person, because Buddha was following the self mortification, and these 5 his friends also, they were following this self mortification, and Buddha stopped that doing. He had that kheer and which was given by Sujata, but these 5 friends, they had gone away. But now when they saw his face, they thought that he has attained something, and even they were reluctant to approach him. They went to him and they started gradually they started to listening to him. उन्होंने पहले तो वो हिचकाहट थी कि मैं हम क्यों जाए, लेकिन जब उनका मुख देखा तो उनको पता चला कि इन्होंने कुछ तो, बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने कुछ तो उनको ज्ञान मिला है, ऐसे उनको लगा, तो वो सुनने लगे। और यहाँ पे अपना जो सुत्त है वो हम बता सकते कि इसके बाद में सुत्त उन्होंने बताया। तो ये जो सुत्त है, it deals with the 2 extremes which should be avoided.
the middle way, which is called middle way, 4 noble truths and noble eightfold path. तो ये जो सुत्त है वो जो दो एक्सट्रीम्स है, ओके, इसे कहा जाता है कि दो अंत, टू एक्सट्रीम्स, वो हमें उससे हमें निकलना चाहिए या वो फॉलो नहीं करना चाहिए। 4 आर्य सत्य कहा जाता है और अष्टांगिक मार्ग, ये पूरे सुत्त में ये महत्वपूर्ण पार्ट है या ये महत्वपूर्ण ये विशेषताएं है ये सुत्त की, और ये बहुत important है। Okay, so what in by middle path which was given by Buddha in this sutta? Okay, so two extreme to be avoided. What do you mean by two extremes? What do you mean by two extremes? So जैसे मैंने सुत्ता बताने से पहले मैंने आपको बोला कि दो समाज में अलग अलग धारणाएं थी. There was a religious and social environment, we can say, which was prevalent at that time. Okay, what was that? I just spoke about 6 heretical teachers, 62 different wrong views which were prevalent in the society. Okay, and Buddha was also, when he was Bodhisattva, he was following those self-mortification kind of things to attain that final bliss, enlightenment. और बुद्ध भी उनके जो बुद्ध होने के पहले 6 साल तक ये जो खुद के शरीर को दुख देना, टॉर्चर करना, ये जो साधना थी वो फॉलो करते। हम अभी भी देखते हैं कि कुछ कुछ जो साधु है वो कुछ खाएंगे नहीं, पूरे बॉडी पे जो मड होता है ना, जिसे हम लोग मराठी में चिखल कहते हैं, वो पूरे बॉडी पे they will just apply that on body. They will stand on one feet, एक पैर पे खड़े होके कुछ साधना करना या समथिंग लाइक दैट. सो ये अभी भी है प्रचलित, और वो समय से, उस समय से ये प्रचलित है. ओके, सो बुद्ध ने कहा कि ये एक चीज है, सेल्फ मोर्टिफिकेशन, जो ऐसे समझती है, ऐसी धारणा है कि लोग समझते हैं कि जो मुक्ति है, लिबरेशन है, वो शरीर को टॉर्चर करने के बाद मिलती है, ऐसी एक धारणा प्रचलित थी. सो ये एक अंत है. दिस इज वन ऑफ द extremes, okay, that Buddha has talked about. There is another extreme which Buddha has talked about. There are some people who were they were engaged in 5 sensual pleasures at higher level. जो sensual indulgence है वो peak level पे कोई बहुत ही, मतलब अभी हम लोग जो भी बोलते हैं कि इंटॉक्सिकेंट्स लेके सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना, ये सारी चीजें हैं, उसमें कुछ लोग बहुत हायर लेवल पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. सो ये दो एक्सट्रीम्स है, एंड बुद्धा सेड दैट यू हैव टू अवॉइड दिस टू एक्सट्रीम. एक तो सेंसुअल प्लेजर्स में, 5 सेंसुअल प्लेजर्स में बहुत इंडल्ज होना, लिमिट के बाहर, एक ऐसे भी लोग हैं, और दूसरे लोग हैं जो सेल्फ मोर्टिफिकेशन, मतलब शरीर को टॉर्चर करना कि इससे मुक्ति मिलती है, इसके लिए. ये दोनों भी जो एक्सट्रीम्स है उसे छोड़ के मिडल पाथ फॉलो करना. सो अवॉइडिंग दिस टू एक्सट्रीम्स, सेंसुअल इंडल्जेंस and self mortification, it's very important. And when you avoid these two indulgence, you avoid these two extremes and you follow middle path. And what is that middle path? The middle path is the Ashtangika Magga, the path, the 8-fold noble path that we are going to see. We will see in the in our talk. Okay, so
This is also important, that why Buddha has given middle path, because these two extremes were there in the society and people used to follow this. Okay. Now the sutta, then further Buddha said that, yes, the four noble truths that people should know, four noble truths. Now, this is also the teaching is also one of the important teaching, because Buddha, when he got enlightened, he discovered, or he, whatever the knowledge he got, this is the knowledge that he got, the four noble truths. Okay. So Buddha then further says that there is a suffering, दुख है ना, दुख है, और वो दुख क्या है, दुख है मतलब क्या, मतलब what does it mean? So जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखो, मरणंपि दुःखं, अप्पियेहि संपयोगो दुःखो, पियेहि विपयोगो दुःखो, यंपि इच्छं न लभति तंपि दुःखो. मतलब जन्म लेना ही दुःख है. As I told you, we should not think that someone is taking birth tomorrow in our family. We should say that that is bad. No, this is a reality and the fact. I'm not saying that Buddha said that the birth is a dukkha, and you should not, if someone is born in your family and you start giving bad words and thinking negatively. But this is a reality that our birth, whenever we take birth, this is the chain of all the suffering. Okay. So janma lena dukha hai, jara matlab decay, old age, that is also dukha. So no one will say that I am old and see I'm so happy. That's okay, he's happy. But when we get this old age, definitely this old age is connected to different diseases. When we are old, definitely we have some or the other problem associated with our body. जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती ही है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज दुख. इसके लिए वो दुख है. उसके बाद में व्याधि भी दुख. व्याधि मतलब डिसीज, जो भी हमें बीमारियां है वो भी दुख है. कोई नहीं कहता बाबा मुझे कैंसर है, क्या बढ़िया है. नो, दैट इज दुख, राइट. सो व्याधि भी दुख, जो भी डिसीज है, जो भी बीमारियां है, वो भी दुख है. और वो किसकी वजह से है? क्योंकि हमें जन्म लिया है, तो ये जन्म लेने के बाद में इससे कनेक्टेड ये सारी चीजें है. When we take birth, the series of things which are connected to our life, definitely that is dukha. Yes, definitely सुख भी है. यहाँ पे बुद्ध ने कभी नहीं कहा है कि सुख नहीं है, सुख है, लेकिन ये भी रियलिटी ऑफ द लाइफ. ओके. व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है. मरण आता है तो हमें दुख होता है. खुद का मरण आया, या खुद के मरण के बारे में सोचना. When we think about that, definitely we get scared. People are not, they don't have that feeling that I should get death as early as possible. People who are old, people who are deceased people, or people who have deceased, they have that feeling. That is a different thing, but we always think that we should be long lived, right? तो मरण है वो भी दुख है, क्योंकि मरण जब जो डेथ रहती है वो हमेशा हम सोचते हैं कि वो आगे बहुत मेरा लाइफ बहुत एक्सटेंड हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा जीऊं, ये हमेशा. सो मरण के बारे में सोचते तब दुख होता ही है. सो ऑब्वियसली मरण है हमारा खुद का, या खुद के बारे में, या दूसरों का, हमारा जो रिलेटिव्स है उनके बारे में, कि वो लाइफ में ना होना, ये भी एक दुख है ना. अप्रिय संपयोगो दुख. बुद्ध ने कहा है कि जो अप्रिय है, वो अप्रिय चीजें या अप्रिय कोई भी व्यक्ति भी जब हमारे पास आती है तो वो भी दुख है. सो देयर आर सम पीपल
to whom we do not like. It happens that when they come to us or when we are around them, we do not feel good. Okay, so that is the dukkha, suffering. Piyehi vipayogo dukkha. People who are loved ones, people who are our relatives, to whom we love much, when they go away from us, that is dukkha. जो प्रिय व्यक्ति है उसका जो वियोग है वो दुख है. ओके, जो जो हमें नहीं मिलता, यंगपि इच्छं न लभति तंगपि दुख, मतलब जो जो हमें नहीं मिलता, जो हम इच्छा करते हैं वो सारा दुख है. यंगपि इच्छं मतलब वॉट एवर वी थिंक दैट वी शुड गेट, वी एक्सपेक्ट समथिंग, and when we do not get, that is also dukkha. Okay, so Buddha has described dukkha. So this is the first noble truth, that there is a dukkha. So this is the description of dukkha that Buddha has given. Then we will see the next truth which is described in this sutta. Buddha ने दूसरा दुख कहा है, नोबल ट्रुथ कहा है, दुख और ये सच कहा है कि वो क्या है. सो दुख समुदय. ओके, दुख समुदय मतलब दुख क्या है, कारण है. तो वो क्या कारण है, क्रेविंग, तन्हा, काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा. हम बिकमिंग की क्रेविंग, नॉन बिकमिंग की क्रेविंग, सेंशुअल प्लेजर्स की क्रेविंग. जो तृष्णा है वो किसी ना किसी तरह हमें रहती है और वो उसका कारण है किसके लिए, दुख के लिए, है ना. हर चीज के लिए हमें अटैचमेंट रहती है, तृष्णा रहती है, और इसी वजह से हमें दुख मिलता है. तो बुद्धा ने ये उनके नॉलेज में बताया कि क्या है, तृष्णा इसका कारण है दुख का. सो वो क्रेविंग है, और वो क्रेविंग किसी भी चीज की जो क्रेविंग है वो हमें हो सकती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेविंग दैट आर कनेक्टेड टू आवर लाइफ. It can be anything. Some people who indulge in sensual pleasures and they have craving for that sensual pleasures. Some people, they have craving for their life, craving for their becoming. There is a craving for non-becoming also. So craving is different, and Buddha has explained that we have craving and because of that we get suffering. ये जो तन्ना है, तृष्णा है, उस वजह से हमें दुख होता है, ऐसे बुद्ध ने ये सूत्र में कहा गया है. अभी बुद्ध ने जो तीसरा आर्य सत्य है या आर्य सत्य है वो कहा है क्रेविंग तो है लेकिन इसका मार्ग भी है, इसका निरोध भी कर सकते हैं. देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग. ओके, तो ये सेसेशन मतलब Buddha has given the root cause of suffering, and Buddha has also given the way to get out of this suffering. The sutta says कि दुख निरोध भी हो सकता है, दुख निरोध भी कर सकते हैं. Okay, so this is third आर्य सत्य, आर्य सच्च, आर्य सच्च, for third noble truth. Okay, so ये दुख मुक्ति का मार्ग भी है, और वो ही तीसरा दुख और ये सच्चा बुद्ध ने कहा है. अभी इसके बाद में जो चौथा है आर्य सच्चा या आर्य सत्य, वो है कि ये दुख निरोध करने के लिए मार्ग है. देयर इज अ way which leads to cessation of suffering, dukkha. Okay, so what is that? And this is a main thing, or we can say that middle path Buddha has talked about, the eightfold noble path. He gives the way which leads to cessation of suffering and to attain nibbana, to attain that final bliss. So ये दुख मुक्ति का मार्ग भी बुद्ध ने कहा है, उसे दुख निरोधगामिनी पट्टिपदा कहते हैं, जो चौथा आर्य सत्य है. ओके, क्या है वो?
सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा जीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये पाली के वर्ड्स है। आई विल जस्ट टेल यू इन इंग्लिश एंड हिंदी. So what is this samma ditti, samma drishti, or right view? It is called right view. We should have, everyone should develop that right view. What is that right? What do you mean by right view? So when we say right view, a person should be able to know what is wholesome, what is unwholesome, what is right, what is wrong. हमें क्या कुशल है, क्या अकुशल है, कुछ क्या चीज फॉलो करने से हमें हम लोग रॉन्ग वे से जा सकते हैं, अकुशल क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुशल अकुशल जानना. when we said we were talking about 6 heretical teachers, हम लोग जो 6 टीचर्स है उनके बारे में समझ रहे थे, तभी मैंने एक बताया था कि उसमें से एक टीचर ये भी बोल रहे थे कि वहां जहाँ कुशल कर्म का कोई फल नहीं होता. सो ये जो धारणा है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रॉन्ग व्यू. ओके, वी शुड डेवलप राइट व्यू, that we should be able to know what is right, what is wrong, what is unwholesome, what is wholesome. This is called right view. So right view, it is just opposite to wrong view. ये जो राइट व्यू है, सम्मा दिट्ठी है, ये जस्ट मिच्छा दिट्ठी मतलब रॉन्ग व्यू के अपोजिट है. हम जो भी क्रियाएं करते हैं या कुछ भी सोचते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये राइट है या रॉन्ग है. हमारा व्यू वैसा होना चाहिए. तो ये स्टार्टिंग में ही पहला पाथ है अष्टांगिक मार्ग का या 8 फोल्ड नोबल पाथ का, जहाँ पे हमारी जो व्यू है वो ही सम्यक होना चाहिए, राइट होना चाहिए. उसके बाद में जो सेकंड है वो है सम्मा संकप्प, दैट मीन्स राइट रिजॉल्व. अभी ये राइट रिजॉल्व क्या है? व्हाट इज राइट रिजॉल्व? सो राइट रिजॉल्व, यू डू राइट रेजोल्यूशन. Resolution of what? Resolution of I make resolution to walk on the path of Dhamma, the right path of Dhamma, which takes towards liberation, the path which is given by the Buddha. Then I make resolution to renounce this life. Now Buddha has said that to get the enlightenment, definitely it is one of the main an important phase of our life, that we renounce this life or this household life. Why he said? Because the household life is, it is so busy. We are so busy, and that we cannot follow meditation the entire day. Definitely we are busy. So this is one of the part of the spiritual way Buddha has said. So this is also right resolve. So these are the different resolves that one should have. हमें जो निष्क्रमण है और जो बुद्ध का जो मार्ग है उस पे चलना. जब हम हाउस होल्डर है तो इस मार्ग पे चलना. आगे जाके बहुत डीप है ना, हम डीप फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिनाउंसिएशन करना, निष्क्रमण करना, घर से बाहर जाके भिक्षु बनना, भिक्षुनी बनना, ये भी बुद्ध ने कहा गया है. लेकिन वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ धम्मा, ये जो पाथ है उसमें फॉलो करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. और उसे संकल्प करना, उसे सम्मा संकल्प कहते हैं, सम्मा संकल्प. उसके आगे है सम्मा वाचा, राइट स्पीच. तो हम जब पंचशील भी फॉलो करते हैं तभी भी ये जो आता है कि झूठ ना कहना. whenever we follow the 5 precepts, we can see that one of the precepts is we should not speak lie, we should not lie. So samma vacha includes we should not speak lie, झूठ नहीं कहना है. उसके बाद में
हार्श स्पीच, बहुत हार्श बोलना वो अवॉइड करना है। निंदा करना, when we should not do slandering. Useless talk also, there are some people who just they will speak useless. There is no meaning when they speak, nothing, and there is no time to speak also. At that time also they will keep on speaking. So useless जो speech है वो भी ना करना, इसे कहा जाता है सम्मावाचा. So सम्मावाचा मतलब right speech कहना. ओके उसके बाद में है, ये सुत्त में आगे जाके कहा है कि सम्मा कम्मंतो, ये है 4th पाथ है अष्टांगिक मार्ग का, जो ये एक एक फॉलो करके पाथ हम लोग जो लिबरेशन है उस तक जा सकते हैं. सम्मा कम्मंतो राइट एक्शन, राइट कंडक्ट. ओके ये क्या है? सो जो भी कार्य करते हैं, ओके जैसे कि when you kill someone, you torture someone, or you harm someone, so we should avoid, we should be away from that action. So no killing, okay, then चोरी नहीं करना है. We should not take something which is not given. Okay, जो चोरी करना मतलब जाके किसी पे डाका डालना, कहाँ पे डाका डालना, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे मतलब है कि जो चीजें हमें नहीं दी गई है वो भी ना लेना. ओके दिस इज एक्शन राइट. व्हेन वी हम लोग जो किसी चीज को लेते हैं जो हमारी नहीं है, वो लेना भी गलत होता है. ठीक है. सो नॉट टेकिंग विच इज नॉट गिवन टू अस. देन नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट न करना, ये भी सम्मा कम्मंतो में आता है. दिस इज कॉल्ड राइट कंडक्ट. ओके सो दिस कम्स इन सम्मा कम्मंतो. ये सम्मा कम्मंतो में आता है जहाँ पे हम जो भी जो एक्शन कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारा खुद का जो कर्म है वो गलत हो जाता है. जैसे कि इंजरिंग, किसी को इंजर करना, किल करना, या जो चीजें हमें नहीं दी गई है वो लेना, या सेक्सुअल मिसकंडक्ट. ओके उसके बाद में जो 5वां है वो सम्मा आजीव. सम्मा आजीव मतलब राइट लाइवलीहुड. whatever earnings we do, so that earning should be right. So what are these things? Now people will say that I have business in weapons, I have business in I have trade and business in meat और liquor, मतलब दारू, नशा, पता जो भी है उसमें मेरा कोई कुछ बिजनेस है, या जो मटन या जिससे प्राणी हत्या होती है और आप उसका बिजनेस करते हो, और वेपन्स में जो आप वेपन्स है वो आप बेचते हो. और क्यों ऐसा? क्योंकि ये सारी वेपन्स का उपयोग जो है वो किसी को टॉर्चर करने में, किसी को इंजर करने में होता है. इसके लिए वेपन्स होते हैं. आप जाके नहीं उसको टॉर्चर करते हो, लेकिन जिस चीजों से टॉर्चर किया जाता है उसमें आप इन्वॉल्व होते हो. इसके लिए आप ये ट्रेड ना करें या बिजनेस ना करें, ऐसे बुद्ध ने कहा है. सो सम्मा आजीव मतलब राइट लाइवलीहुड. जो भी आप पेट के लिए कमाते हैं, वॉट एवर द अर्निंग्स यू अर्न, दैट शुड बी अर्न in a right way. Okay, so no trade in weapons, living beings, meat, liquor and poison. Okay, उसके बाद में जो 6th पाथ है अष्टांगिक मार्ग का, वो है सम्मा वायामो. सम्मा वायामो में क्या है? राइट एफर्ट. राइट एफर्ट किसमें? मैं अपने काम में राइट एफर्ट कर रहा हूँ वो नहीं. नाउ दिस राइट एफर्ट इज जो प्रयत्न करना होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग पे जाते जाते जो बुद्ध ने कहा है उसमें हमें, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. ये बिल्कुल ही छोटी चीज नहीं है. यहाँ पे बहुत हमें परिश्रम करना है.
कोई भी पंचशील भी फॉलो करना होता है तो हमें बहुत परिश्रम लगता है, क्योंकि ये सीधी चीज नहीं है, तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो वो एफर्ट लेना है ना आध्यात्मिक मार्ग पे, उसे हम लोग सम्मा व्यायामो कहते हैं, राइट एफर्ट। ना कि हम लोग आज काम किया, मैंने जो भी है, मैं बिजनेस करती हूँ, जो भी मैं काम पे जाती हूँ, मैंने 8 घंटा काम किया, 10 घंटा नहीं। So right effort, it is associated with spiritual path that has been told by the Buddha. So when you you put lot of effort to prevent unwholesome state of your mind. हमें कुछ भी अकुशल ना करे, इसके लिए जो हम एफर्ट करते हैं उसे हम सम्मा व्यायामो कह सकते हैं, या कुशल कार्य करने के लिए जो एफर्ट डालने पड़ते हैं उसे हम राइट एफर्ट कहते हैं। मन में कुछ अकुशल धारणाएं ना आए, इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको राइट एफर्ट कहते हैं। उसके लिए हम माइंडफुल रहे, जो मेडिटेशन करते हैं, that is called right effort. Okay, this is called the right effort. When we meditate, we concentrate and we are mindful towards our unwholesome actions and to increase our wholesome actions, right? This is called right effort. Now going ahead, I'm going very fast, sorry, because 1 hour is given and I think it's 8:30, but we are at the end of our session. So seventh path is, which is told in given in this sutta, sammasati, right mindfulness. Okay, जो सातवीं फेज है वो है, या सातवां जो मार्ग है वो कहा गया है राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब क्या, कि हमारा जो चित्त है वो हमेशा हमें माइंडफुलनेस करके, हमें जो स्टेट ऑफ माइंड कहा गया है उसे माइंडफुलनेस की बहुत जरूरत है। मतलब क्या, कोई भी चीज या जो एफर्ट है हम लोगों ने अभी देखा, वो एफर्ट लेने के लिए भी हमें माइंडफुलनेस की जरूरत है, क्योंकि when we are alert that we should not follow unwholesome action, this happens only we are mindful. हम माइंडफुल या अलर्ट रहेंगे, कभी रहेंगे जब हम एक कुछ साधना फॉलो करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोग ये माइंडफुलनेस बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, माइंडफुलनेस रहेंगे तो ही हमें जो कुशल अकुशल कर्म है वो हम लोग, अकुशल कर्म हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और कुशल कर्म हम लोग बढ़ा सकते हैं या उसमें इंडल्ज हो सकते हैं। तो राइट माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट वन इज the path of Ashtangik Marga or Noble Eightfold Path is right concentration. Now, right concentration in Pali, it is said Samma Samadhi. What do you mean by this? The meditation. Now, at that time, there were different meditation which were prevalent in the society. बुद्ध जब थे तभी बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन या समाधि की विधियां प्रचलित थी। उसमें से जैसे हम लोग सीख सकते हैं समथ विपස්සना, समथ एंड विपස්සना, लेकिन ये जो है विपස්සना एंड समथ वाज देयर, बट विपස්සना बुद्धा हैज फाउंड आउट। एंड व्हाट यू मीन बाय राइट कंसंट्रेशन, देखो बगुला भी मेडिटेशन करता है, मतलब ध्यानस्थ रहता है, वो एक पैर पे खड़ा होके ध्यानस्थ रहता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका इंटेंशन रहता है कि वो मछली को पकड़ सके। वो एकदम स्टेबल है, वो एकदम शांत है और समाधि है या जो भी है ना, लेकिन उसका पूरा टारगेट जो रहता है वो मछली को पकड़ना होता है। ओके, सो we have to understand what do you mean by right concentration. The intention of that bagula is to catch the fish, okay, which is wrong. So this is not called the right concentration. So in Pali it is said kusala chittasya ekagrata. That means your mind should be wholesome when you
you are developing that samadhi concentration. So it is one pointedness samadhi or concentration, which should be associated with kushala karma, kushala mind, wholesome mind. तो बगुले जैसी जो समाधि है वो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनका इंटेंशन क्या होता है, अकुशल कर्म करना, मछली को पकड़ के खाना, राइट. सो ऐसे बहुत सारे साधु भी रहते हैं कि जो मेडिटेशन में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन रहता है कि ये साधना प्राप्त हो, वो साधना प्राप्त हो, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं सुपर नॉर्मल पावर्स प्राप्त करूं, लोगों को ठगू वगैरह, व्हाटएवर. ओके, so right concentration is very important, and this is the last phase of that path of eightfold noble path. So Buddha has given this eightfold noble path which takes you towards liberation. जो मुक्ति के मार्ग पे या निब्बान जो है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, उसके लिए लेके जाता है. और ये जो धम्मचक्कपवत्तन सुत्ता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो है, ये आपको भव चक्र जो है, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, उससे आपको छुड़वाता है, या यू कैन गेट आउट ऑफ दैट भव चक्र. ये जीवन मरण का जो चक्र है, जो आप उसमें घूमते रहते हो, birth and then death, birth again, becoming. So you get out of this bhava chakra, and that bhava chakra, when Buddha, Buddha says that, कि आपको ये हर एक चीज, जाति जरा मरण जो भी है, बर्थ, डेथ या डिसीज, इससे छुटकारा पाना हो तो इससे निरोध करने का मार्ग, या इसको निरोध करना चाहिए. इसको आप कैसे इससे बाहर निकले, इसका जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मग्ग या एटफोल्ड नोबल पाथ या अष्टांगिक मार्ग. सो ये बुद्ध ने कहा है, और ये धम्मचक्कपवत्तन है जो बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 5 भिक्षुओं को, पंचवज्ञ भिक्षुओं को बोला था. और अभी हमें लगता है कि ये कितनी सिंपल है, हम लोग सुनते आ रहे हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये तो, बट दिस इज अ मेन टीचिंग. ये तो बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है, और ये बुद्ध का ज्ञान है जो उन्होंने पाया है जब उनको बोधि प्राप्त हुई थी. सो व्हेन ही अटेन बोधि, Buddhahood, and he received knowledge. He received knowledge about 4 noble truths, Ashtangik Marga and Ashtangik Marga. Okay, so here the talk ends, and I think if you have questions, you can raise, or I would request organizers to go ahead further part of the question. Thank you, Dr. Karuna. We really appreciate your talk. We will ask people to raise the hand and wait for your turn for question. आप अपने सवाल हिंदी में भी पूछ सकते हैं. हमारे स्पीकर ने ग्रेशियसली हिंदी और इसमें भी जवाब देने को एग्री किया है, तो आप अपने प्रश्न उस तरह से भी पूछ सकते हैं. हमारा पहला सवाल आ रहा है साथीनाथ जी से. साथीनाथ सर, प्लीज गो ahead and unmute yourself. Go ahead with your question. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Please go ahead. Okay. Well, the last one first. The meditation and concentration, are these two same things? Like when I try to meditate, I've been told that don't think about anything. Keep your mind blank. I mean, just think, concentrate on your breathing or something, and if the mind goes away, bring it back to something. So I don't understand. Is it the mechanics of meditation that's important, or if I'm trying to solve a problem, then concentration on that? Like
I may be trying to think about how to make the society better. So that also requires concentration. So can I be thinking about that, and that would be a meditation or what? I mean, please explain. Thank you. Okay. So now when we talk about meditation, what Buddha said about meditation, that's very important. So there are many types of meditation which are prevalent today's world also. At that time also when Buddha was there. Okay, so we have to understand what Buddha talked about meditation when we say he says the Samma Samadhi, right? So Samma Samadhi is a right concentration of your mind. Okay, so when we say right concentration, that means you concentrate on one particular thing, and it's not for example, right now I have so many thoughts in my mind, so it is distracted. Okay, and when I meditate and I concentrate on one of the object. So in Pali, if we say samatha, means there are many different object of meditation where you concentrate, and your distracted mind you bring towards one object, any one object. So to concentrate your mind, you bring your mind towards one of the object so that your mind can be concentrated. So in Buddhism or in Pali literature, when we talk about samadhi or concentration, it's a one pointedness concentration. Okay, and you are talking about you should not think about other things and all. So we are humans, right? So when we meditate, definitely the thoughts are going to come, but if we are mindfully concentrating our mind, gradually you can develop your concentration. So there are different types of concentration systems or concentration different types of concentrations types or different types of concentrations available or prevalent in the society today also. So according to Buddhism, one pointedness concentration which he tells in Pali literature, Pali साहित्य में उसे एक किसी भी एक आलम्बन पर अपना चित्त कॉन्सेंट्रेट करना, इसे कंसंट्रेशन कहा जाता है. Did I answer your question, or you have different? So there was second part to his question related to a social change. If he's thinking about that to make any social change, is that also part of the concentration? No, that is not concentration. Okay. Yeah. Thank you very much. Your next question comes from Jagannath sir. Jagannath sir, please go ahead, unmute yourself. Okay. Okay, am I audible? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Namo Buddhaya, Jai Bhim, Dr. Karuna Jadhav ji. I'm convinced because your interpretations from Pali and also जी हिंदी में अपने जो इंग्लिश में जो इंटरप्रिटेशन किया, I'm convinced. मगर मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए मॉडर्न ह्यूमन साइकोलॉजी में if you take Maslow's self-actualization, you see when you have the basic needs being fulfilled, when we get into the higher needs, for example, when you want to belong to the community, belong to what after getting knowledge, what after getting a part of enlightenment.
then you come to a situation that you start doing something like altruistic love, helping others. In simple terms, in practical terms, what Goenka ji said, Vipassana, I think one has to pulsate with Dhamma. What is my Dhamma? Things like that. So I am stuck up, and I request you to answer this question that Buddha, his enlightenment has given a very comprehensive approach, no doubt about it. But modern times, life is not so simple as it was in Buddha, the most enlightened Arahant days. Today we have situations in which human self is no longer human self. It is a commercialized human self. It's a conditional human self. It's a highly provoked human self. We start doing things in a very subjective way, not objective way. The question is very simple. How to correlate the Arahant's interpretations to modern complex life? I do have some symptoms of what should be the way out. It could be carbon footprint, it could be carbon credit in the form of an institution, carbon footprint in the form of an individual. So kindly show me some correlation between the most enlightened vision and also the modern. See, when you are having this 12th of 13 Ashtamarga, your interpretation is very convincing for me. But how to correlate present days, just to cut it short, I will put it this way. If a girl has seen her hometown being totally submerged, when she becomes a teenager in America or Europe, her life is well settled, but she doesn't have a home. That is to say, there are so many changes like climate change, global warming, and there are so many changes that are happening in life. People are forced to do things which they may not like. So I think it looks very complex, but the life is like that. So if you want to put in a simple question in 3 sentences, 3 words or 4 words, my thing is how to correlate the most enlightened vision of Ashtamarga to modern days complex life. I hope I'm clear. So what I understood from your what you said, whatever the way Buddha has given which leads to liberation, how we can correlate with the modern problems, whatever. Is it like that? Is it your question, sir? Yes, I think yes. That's exactly the question he was asking. Yes. Okay, first of all, I just wanted to, because I am also the meditator and I have learned Vipassana, I just wanted to tell you something. When we say the Buddha's teaching, that whatever the Buddha said, that you have to walk on the path of Dharma and you have to follow this and that. And then today's modern life problems are also there. Whatever the problems, global warming, each and every country has different problems nationwide. But I just wanted to tell you these problems, each and every problem solution. I'm not saying that directly you will get the answer out of this, whatever the Buddha says, the teachings. But definitely, if you say, when we say the global warming also, now why there is a global warming? We have to go to the root cause. So when Buddha says wherever there is a problem, the cause is there, right? So when we say that, when we talk about the 4 noble truths, if we correlate with each problem that we have, there is a dukkha, that means there is a problem, and there is a solution. That is when Buddha says the way, how to get out of that dukkha. That means you have way to get out of that problem. So whatever problem you take, but Buddha's teaching applies to each and every problem. If you see, there is a dukkha, that means there is a problem. There is a solution
there is a cause to that dukkha. That means there is a cause to that problem, and there is a solution also to that suffering. And that's in the similar way, there is a way which you can, solve that problem. And there is a what is that way? The way to get out of that cessation of dukkha, the Ashtangik Marga. So definitely there is a way, solution to get out of that problem. So everyone has to think about this. Buddha has given the framework where you have to fit into the each and every problem, and you have to look in from that point of view. So I will just speak in Hindi because my Hindi. बोलिए. I'm very comfortable. I'm very comfortable. Yeah, no, I'm not saying. I'm talking about my students who have joined from India. बोलिए हिंदी में बोलिए. कोई भी जो समस्या है, वो समस्या को हम एक फ्रेमवर्क में डालेंगे, तो बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है, वो जहां पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका सोल्यूशन मिलता है. जैसे दुख है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, दुख का कारण है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसका भी कारण रहेगा. ये जो दुख है उसका सोल्यूशन है. वैसे ही ये प्रॉब्लम का, ये जो समस्या है उसके भी क्या है, सोल्यूशन है. और वो जो वे है, इसी तरह से ये प्रॉब्लम का भी एक उससे बाहर निकलने की कुछ ना कुछ विधि रहेगी, या कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहेगा. Same applies to. So Buddha's teaching applies everywhere, directly or in indirect way. वो ठीक है. I fully, if I don't agree fully, but it's coming almost nearer to the correct answer I was expecting. But in that case, the last thing would be, can we consider community action as Buddha aligned? Can we consider collective action? For example, I segregate waste at source. I have my climate footprint. It is, see, for example, in America, it is 4 times the Indian way of life. If the Buddhist, followers can make their carbon footprint to about 1/3, if not 4 times, because in India it is 1.9 tons of carbon dioxide per year per person average, but in America it is 4 times. So Buddha will be actually alive when we say that the cause is there, lifestyle. And I'm following Buddhism, and I'm following Buddhist thoughts, so my carbon footprint is improved. See, that can make an opportunity for we who follow Buddha to say that we are the right people for the harmony and bring down the global warming, things like that. I mean, this is my loud thinking. Kindly respond if you can. Okay, so this was your opinion, right? Exactly. You express your opinion. Okay, can we take next question? I think. Please, that's better. Yeah, your next question comes from Geet Kumaratunga. Please go ahead, sir. Yes. Yes, I'm Geet from Sri Lanka. So, am I audible? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Yes. I don't have any question. Actually, I don't have any question. I just want to comment on today's lecture. Actually, thank you so much for your lecture, ma'am. You have given us Dhammacakkapavattan Sutta in very clear way. Thank you so much for that. We have been chanting, we have been studying Dhammacakkapavattan Sutta in my language as well as in English language. But today's talk, it was very clear to me. You express everything in very clear way. So thank you so much. Even it's a very short time. You took it in very serious way, and you elaborated everything very quickly, but I could understand every single part in very clear way. So thank you so much for that. And tomorrow is a very special day for us because tomorrow it will be the Asada Purnima in Sri Lankan calendar, according to Sri Lankan calendar. So this would be a very great opportunity to recall Dhamma with whatever you have taught us. So thank you so much, those who organized this, and thank you so much for ma'am also. Hope to join next sessions also. Thank you so much. Yeah, thank you, Geet. We appreciate it. Thank you for this appreciation. Your next question comes from Megha. Megha, please go ahead and ask your question. Hi, Karuna ma'am.
You told about 4 noble truths. Life is suffering, and the cause of suffering is craving, and the end of suffering, and there is a path which leads one way from craving and suffering. So मेरा question ये था कि this is all our theory, and when we connect it to our social life, there are different types of sufferings. If someone passed away in the family, then that is different. But if someone has other problem, there will be a solution. For an example, I would give like people who are very good in education. There is a way like we can pull them up, we can put them in colleges and all. But then everyone is not for education. So from our community, Buddhist community, there was a lady who was very much in dukkha. She needed a support, but somehow from Buddha Vihara, we failed to help her. And Nivaran has come from church. They people went to her home and convinced her. They took her admission to that institutes where they give learning on that catering and all, and they helped her to establish the business. So now she is out of her dukkha. So Buddhism is actually very nice theory and everything is nice, but somehow हम लोग उसको प्रैक्टिकल चेंज में हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं. आपको ऐसा लगता है? We need a setup. Are you asking my opinion? Yeah. We cannot follow practical life. You are asking my opinion, right? या मतलब हमारा इतना नॉलेज है और इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर पा रहे. मतलब ये है थियरी है, बट इसको प्रैक्टिकल में भी आना चाहिए. Somehow वो सेटअप हमारा. So जब हम लोग नहीं ला रहे उसको प्रैक्टिकल में, so that is our I think negligence, or we can say that problem. Buddhism in practice, definitely I would say that it's not like that. It's something which we cannot follow. And that's why Buddha has said that middle path. Buddha did not say, if we talk about other contemporary religion, at that time, the Nigantanatha Putta, or we can say right now also, that we should not, kill anything, or we should not harm, and they put mask over their face or mouth. And they say that whatever the beings are there, insects are there, we are just saving them out of that. Buddhism does not say. Buddhism says that whatever is needed at that time, you can definitely, if we say the vegetables, the things, the eatables which comes under the ground, that we have to eat. It's not like that the insects are there. There are some small living beings or micro living beings there. They are there inside the body. And when we have some, when we get some disease, definitely we take medicine. Now, what is this medicine? Medicine to kill those, what we say, the beings which are there, the insects, or what we say, जो भी हमारे जो डिसीज है या जिस मेडिसिन लेने के बाद में वो डिसीज ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन क्या करते हैं, लेते हैं. सो मेडिसिन लेते हैं मतलब क्या, वो जो भी जीव जंतु है उसको मारते हैं, राइट? सो बुद्धिज्म डज नॉट से दैट हार्मिंग इन दैट वे. सो दैट्स व्हाई मिडिल पाथ इज देयर. वो नहीं कह रहा है कि उसको भी आप मेडिसिन भी मत खाओ क्योंकि अंदर के जो जीवाणु है या जो भी है वो मर जाएंगे. दैट इज नॉट द बुद्धिज्म. बुद्धिज्म सेज मिडिल पाथ. और बुद्धिज्म प्रैक्टिस में ना लाना या नहीं, हमारा जो ओपिनियन है कि हम लोग ला नहीं सकते. सो बुद्धिज्म, हाउ मच बुद्धिज्म दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Being a teacher also, I think I have to read a lot. I think that I'm still learner. I'm not saying to follow Buddhism, yes, it's difficult, and that's why Buddha said no. The one of the path is the effort, right effort. It's very difficult because we have to put a lot of effort to develop that skill, to develop that path, to develop that way. It's very important. It's walking on the path of Dharma. It's not important, and taking that Buddhist path into practice, it is also very difficult, and we should know that Buddhism from that point of view. We have to learn much, and it's not easy, I would say. I am not saying that from tomorrow I will walk on the path of Dhamma fully. It's very difficult, and that's why one of the path from that Ashtangik Marga is right effort. Okay, so we can take that teachings into our practical life, but we should be able to understand
that Buddhism very in a correct way. That's very important. Now there are some people who are nearby sea, right? They eat that fish. We cannot say that because their livelihood is on that. We cannot say the Buddhism does not say that people should not eat fish. Okay, we have to understand Buddhism in a right way. That's very important. Okay, so definitely Buddhism we can bring that Buddhism into practice, and it can solve the practical problems also. But we have to understand Buddhism in a right way. That's very important. Thank you. Yeah, thank you very much. And your last question for the day comes from Dr. Sheetal. Ma'am, please go ahead with your question. Yeah, Namo Buddhaya, Jai Bhim, everyone. And Yeah, Dr. Karuna, such a wonderful, excellent session you have taken today, right on our occasion tomorrow, Ashar Purnima. So thank you so much and graciously accepting that invitation to be a speaker on this forum. तो मेरा एक कमेंट है मैम और एक क्वेश्चन भी है. तो कमेंट ये है कि अभी फिलहाल जो हमारी हर हफ्ते हम ये धम्मा सेशंस लेते हैं, डेडिकेटेड धम्मा सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन विहारा पर भी धम्मा सेशंस होते हैं. तो आपने बहुत अच्छे से समराइज किया कि जो सम्मा आजीवा है, जैसे कोई कहता है, जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि that person was working in ammunition, right? तो आर्मी में जो ammunition supply होता है, he was not directly in making that, right? But somehow maybe accounting के jobs और ये जो भी होते हैं, लेकिन जो है कि you are still in that business, somehow you are profiting that business, or at least your intention is to make that product good, और जो ultimately जो product use करने वाला है, that's gonna be for destruction of life, right? Ammunition बना के कोई कहीं पर भी शांति स्थापित नहीं होगी या पंचशील भंग नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है. तो ये एक मेरा कमेंट है मैम, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I just wanted to say this question actually raised by many people that जो आर्मी में रहते हैं उनका क्या, because they are actually people who protect the country. They are there to protect the country. So if you see, I just wanted to give you one of the episodes which happened in Buddha's life also. If you know the Pasendi, he was a king. There was a king called Bimbisara. There was a Koshala king, Koshala region's king, Pasendi. And it is there are some references where Pasendi used to go to war, for the war, and before that he used to come to Buddha. So he used to tell that I'm going for to fight with enemies. And before that, he used to come to Buddha, he used to salute Buddha, and he used to go. So that time, he did not say anything to him that you should not go and all this. Other thing, we have to understand that when there is a protection of the country, or Buddha did not give any negative opinion in Pali literature. If you see, I have given the example which is there in Pali, because this question was asked by many people. But if you see the VRI, Vipassana Research Institute also, they have published books, and in that book also, Guruji talks about this. He gives replies to this question, that when there is a collective way of protecting our people and enemy, and the intention is not to kill but to protect. Okay, so here I would like to give example. One of the doctor who also takes that knife and operate a person, but his intention is to save that person, and somehow that person is died. Okay, there is another person, thief, and the thief comes and he kills that person because he want to steal something from his house.
and that man kills. Now there are two situations where doctor is there and he wanted to save his life, but somehow he dies, and there is another person whose intention is to kill that person so that he can steal property or something, money from his house. Now we cannot say that the both person will get the same reward. Okay, so Buddha says, Chetana ahang bhikkhave kammang vadami. That means the intention decides the reward of the action that you have done. जो कर्म है उससे हमें उसका जो फ्रूट है, इंटेंशन है, वो समझ में, वो आपको पता चलता है. सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, उसका इंटेंशन था वो आदमी को जीवन देना, लेकिन वो मरता है. उसका रिजल्ट एक ही है कि दोनों में भी आदमी मरा है, लेकिन इंटेंशन क्या था डॉक्टर का? उसको सेव करना. और यहाँ पे इंटेंशन जो चोर का था वो उसको मारना था ताकि उसकी प्रॉपर्टी और पैसा ले ले. तो यहाँ पे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी केस. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल किसी ने मारा, मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था मारना. इंटेंशन वो खुद बोलता है, उससे नहीं होता है. इंटेंशन स्टेट ऑफ माइंड. ओके, समटाइम्स नेग्लिजेंस ऑल्सो. नेग्लिजेंस से भी वो, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था. सो आप नेग्लिजेंस भी है आपके माइंड में, तो वो नेग्लिजेंस भी नहीं होना चाहिए. इसके लिए माइंडफुलनेस भी होना चाहिए. द एक्शन यू टेक ऑलवेज. ओके, तो यहाँ पे इंटेंशन बहुत मायने रखता है. आई थिंक I have satisfied with the question that you have answered, with the answers that I have given. Yes, ma'am. I think I have follow-up questions, but we can discuss it later. It may not be relevant today. Other question I have, तो आजकल जो ये हमें अभी जिस तरह से अभी भारत में जिस तरह से लुप्त हो चुका था पूरी तरह से बुद्धिज्म, और फिर अभी जो क्रांति चली है, बाबा साहब ने जो हमें धम्म दीक्षा दी 56 में, उसके बाद से जो बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ है, तो हम स्टिल वेरी इन्फेंसी में हैं. हम जो पढ़ रहे हैं, स्टिल हमारी जानकारी उतनी नहीं है. तो ये जो लोगों ने अभी चलन बनाया है कि वो धम्म दीक्षा जो दिवस है उसी को धम्मचक्कपवत्तन दिवस कहने लगे हैं. तो ये मैं जानना चाहती हूँ मैम कि आपसे, और ये आप इस फोरम में बताएं ताकि और लोगों में ये एक जागृति हो कि धम्मचक्कपवत्तन ये सिर्फ बुद्ध ही कर सकते हैं, किसी और में ये होती ही नहीं है ताकत धम्मचक्कपवत्तन करने की. तो मैम आप इस पे थोड़ा सा जानकारी दीजिए. यस, धम्मचक्र जो है वो बुद्ध ही करते हैं. द बुद्ध ओनली इज अ केपेबल पर्सन हु कैन डू धम्मचक्र. And we have to understand. See, what happens is that we Buddhists, or we the followers of Dr. Babasaheb Ambedkar, we have faith. We are emotionally attached to Dr. Babasaheb Ambedkar. I am not saying that these are our views. These are the things which we developed after his death. That Dr. Babasaheb Ambedkar did not say that I have done the Dhammacakka. You call me Bodhisattva. You call me whatever. These are the things which followed after his death. We have to understand, we salute to our great father. We have a lot of faith. We are emotionally attached to his work. We are emotionally attached to his things which are associated with him. But we have to understand from Buddha's teaching. Buddha is the only person who do Dhammacakka, and that only can be done by the Buddha. Okay, so I'm not here to कि मैं किसी की भावनाएं जो है या जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ. उन्होंने खुद कभी नहीं बोला था कि मैंने धम्मचक्कपवत्तन किया है, उनके फॉलोवर ने कहा है. लेकिन बुद्धा is a person who does this Dhammacakka only. He's a capable one, and this is a spiritual, I think, ये जो है ये आध्यात्मिक ये है जो बुद्ध ने किया है. सो हम लोग बहुत सारी चीजें जो हमें बहुत प्रेम है या हमें बहुत उनकी तरफ से लव एंड अफेक्शन है, तो हम ऐसे कहते हैं. तो उन्होंने कभी नहीं कहा, ये अपनी है जो हम लोग कहते हैं. ओके.
Yeah, thank you very much, Dr. Karuna. So that was our last question for the day. We are really grateful to you, Dr. Jadhav, for coming on this forum, taking this very important topic very close to the occasion. Tomorrow is the full moon day of Ashad. So thank you very much again. I have to make two announcements today. So starting tomorrow, during this Vasa period, there would be a daily Paritta chanting, Paritta Sutta chanting, that would be organized in association with Samanvay Seva Sansthan from Lucknow, and that would be done on a daily basis. We will be taking certain suttas on each days, and then that cycle would kind of continue again, and we'll be doing this on a daily basis. This happens at 8 p.m. India time every day. And if you have joined to those WhatsApp groups where the invitation was sent out right now, to join the WhatsApp groups, you can get invitation to join those sessions on a daily basis. And also on that WhatsApp group, you would get our weekly Dhamma sessions, which are dedicated for Dhamma topics only. That happens on Saturday. You will get notification for that as well. Okay, I just wanted to say one sentence. There were many questions related to Dhamma and Buddha's teaching. In one lecture, we won't be able to give reply to your questions. So I think we should join some Dhamma academic courses which are run by the different institution. And I am basically from Somaiya College, Mumbai University. So you can join those courses because we have so many questions, and it happens that we read something and we want the answer of that question, and then we start searching for such a person who can give answer. So we have to study also. It's very important to study. So please join courses which are there nearby you, or you can join Somaiya Vidyavyas course. Thank you. Yeah, thank you very much again. I think if someone want my number, I will just. Yes, yeah. We will share it with them if we were going to. You can contact organizers. Thank you. Yeah. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Karuna. And I wanted to thank our story reader today, Arnav Masde. Very nicely read story today, and very well delivered. So we thank you too, and we thanks the parents as well for encouraging their kids to join this Dhamma story session. And last but not least, we are grateful to Bhante Sivli for his Dhammadana today. And with that, we will conclude today's session. We will see you again on our forum next week.